हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। इस पूरे सीरीज में गिटहब और गिट के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक हम लोगों ने कवर किए, स्टार्टिंग फ्रॉम गिट इनिट टू गिट मर्ज एंड गिट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स। इस वीडियो में हम लोग गिट और गिटहब के एक मेजर इंप्लीमेंटेशन दैट इज ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के बारे में सीखेंगे। नाउ व्हाट इज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप एक मशीन बिल्ड कर रहे हो एंड यू नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फॉर दैट आपके पास ऑप्शंस क्या है? यू कैन आइदर परचेज विंडोज, पैसा देके परचेज करो एंड स्टार्ट यूजिंग इट, और यू कैन इंस्टॉल लिनक्स or like any image of Linux, for example CentOS और Ubuntu। इसमें फ़र्क क्या है? आपको पे करना नहीं है, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, यूज करना है। Now why is this possible? The reason behind this is Linux or the flavors of Linux are open source। इसका मतलब क्या होता है? This means that this Linux software is managed by a community। इसका कोई मेजर ओनर नहीं है। The community manages the software। That's why it is called an open source software। What it does is इसमें आपको पूरा सॉफ्टवेयर और उसका सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल मिल जाता है। नाउ इफ देयर आर एनी बग्स, फॉर एग्जांपल विंडोज में जो बग्स रहेंगे उसको माइक्रोसॉफ्ट फिक्स करेगा, राइट? अगर लिनक्स में बग्स रहेंगे तो उसको पूरा कम्युनिटी फिक्स करेगा। एनीवन कैन जस्ट सी द बग एंड गिव अ फिक्स। तो उसमें से जो बेस्ट फिक्स रहेगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा एंड इट वुड बी एडेड टू द सॉफ्टवेयर। दैट इज द होल वर्किंग ऑफ एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। इसमें सोर्स कोड एंड सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल है एंड इट इज एंटायरली मैनेज्ड बाय कम्युनिटी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्क। हम लोग खुद का एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाएंगे, अ टेस्ट सॉफ्टवेयर, एंड वी वुड आल्सो लर्न हाउ टू कंट्रीब्यूट टू एन ओपन सोर्स। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हम लोग के पास दो टैब्स ओपन है जहाँ पे दो गिटहब अकाउंट्स है। यहाँ पे एक टेस्ट डमी अकाउंट है जहाँ पे हम लोग एक गिटहब रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे एंड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। So the first step towards creating an open source project is to create a GitHub repository। यहाँ पे हम लोग एक GitHub repository create करेंगे। Let's call it open repo। You can call it anything। तो ये अपना project है basically जिसका नाम है open repo। Now इसका visibility public होगा। The reason behind this is like this project should be available to everyone। Everyone should be able to see it because ये open source है, so it should be freely available for everyone to use। उसके साथ हम लोग एक बेसिक रीडमी फाइल भी ऐड कर देंगे हियर इटसेल्फ एंड वुड क्रिएट दिस रिपोजिटरी। सो एज यू कैन सी अपना रिपोजिटरी क्रिएट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप इज डन। लाइक दिस इज आवर फर्स्ट एवर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। तो व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल रिपोजिटरी, राइट? लाइक ये ओपन सोर्स है, लोगों को कैसे हम लोग बता सकते हैं कि ये ओपन सोर्स है? सो द डिफरेंस इज देयर शुड बी अ लाइसेंस फाइल। तो व्हाट इज अ लाइसेंस फाइल? एक लाइसेंस फाइल एक फाइल होता है जो आपके रिपोजिटरी में इंक्लूडेड होगा, विच सेज दैट दिस प्रोजेक्ट कैन बी यूज्ड बाय एनीवन फ्रीली। अपनी वी कैन एक्चुअली यूज दिस एप्लीकेशन फ्रीली एंड डिस्ट्रीब्यूट इट विदाउट एनी कॉपीराइट इश्यूज। तो हम लोग को ये फाइल क्रिएट करने का है। तो कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे प्रेस कीजिए ऐड फाइल एंड क्रिएट अ न्यू फाइल। लाइक वी आर क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, यू कैन एक्चुअली कॉपी अ फाइल एंड पेस्ट इट हियर एंड क्रिएट अ लाइसेंस फाइल। पर गिटहब में आपको एक फीचर मिल जाता है फॉर क्रिएटिंग अ लाइसेंस फाइल। जस्ट टाइप लाइसेंस। जैसे आप यहाँ पे लाइसेंस टाइप करोगे यू गेट दिस ऑप्शन कॉल्ड चूज लाइसेंस टेम्पलेट। नाउ द एक्सटेंशन इज एमडी विच इज मार्कडाउन। आपका जो रीडमी फाइल होता है वैसा ही आपका लाइसेंस डॉट एमडी फाइल होगा। यहाँ पे यू कैन चूज अ लाइसेंस टेम्पलेट। यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट्स है फॉर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस विच गिव यू अ बेसिक स्केलेटन ऑफ द ओपन सोर्स लाइसेंस टेम्पलेट। यहाँ पे MIT लाइसेंस आप देखोगे, इट इज सेड परमिशन इज hereby granted for free of charge to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files। इसका मतलब है कि कोई भी आपके सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है एंड दे वोंट बी लायबल फॉर एनी कॉपीराइट नोटिस। ठीक है, यहाँ पे रिव्यू एंड सबमिट, यहाँ पे कमिट। सिंस फॉर एडिंग अ न्यू फाइल यहाँ पे एक न्यू कमिट रेडी क्रिएट होगा, एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होगा। लाइक दीज आर द बेसिक थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन इनटू दिस कोर्स। ये मर्ज कंफर्म कर दिया। तो एज यू कैन सी वी हैव दिस लाइसेंस फाइल एडेड टू दिस रिपोजिटरी। तो ये अपना ऑफिशियली एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। लाइक देयर इज एन MIT लाइसेंस। along with that you should along with this you should actually add an about। यहाँ पे about होना चाहिए, like should be a description and the readme file should be more descriptive।
इसका मतलब क्या है कि रीडमी फाइल में यू शुड हैव हाउ टू क्रिएट, हाउ टू एक्चुअली रन द सर्वर, कैसे आप प्रोजेक्ट को रन करोगे, कैसे इंस्टॉल करोगे, ऑल दोस इंस्ट्रक्शंस शुड बी इंक्लूडेड इन दिस रीडमी फाइल. So those are the basic concepts of how you can create an open source project. इसमें you can add your files, इसमें you can add your folders, everything should be added inside this particular repository. So as you can see, मैंने यहाँ पे रीडमी फाइल में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, यहाँ पे एक लिंक ऐड कर दिया टू मेक द प्रोजेक्ट लुक एंड फील बेटर. यहाँ पे ऑल्सो एक index.html फाइल क्रिएट हो चुकी है. ठीक है, तो ये हम लोग का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. So now ये freely available है for everyone. I'll just copy the link of this repository. फिर हम लोग जाएंगे अपने दूसरे अकाउंट में and here we would be searching for that. You just search for this repository और ये मेरे को available हो गई है in this other account. Right? यहाँ पे repository available है. I can see the about, I can see the readme file, I can see the license and here you can see the MIT license is written. इसका मतलब है कि open source project. राइट. नाउ अगर मुझे इसको यूज करना है, हाउ कैन आई यूज इट? आई कैन जस्ट कॉपी दिस एंड आई कैन जस्ट क्लोन दिस फाइल. राइट. सो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग इसको क्लोन करेंगे. वी वुड यूज इट एंड वी वुड ट्राई टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट. सो हम लोग यहाँ पे इस रिपोजिटरी का HTTPS लिंक कॉपी करेंगे. वी वुड गो टू अ फोल्डर एंड यहाँ पे वी वुड ट्राई टू गिट क्लोन दैट एंटायर रिपोजिटरी. नाउ सिंस रिपोजिटरी हम लोग ने जो क्रिएट किया था वो पब्लिक है, वी कैन क्लोन इट एनीवेयर. यहाँ पे हम लोग का रिपोजिटरी क्लोन हो चुका है. एज यू कैन सी यहाँ पे index फाइल जो क्रिएट हुआ था, वी कैन यूज इट. लेट्स ट्राई टू ओपन इट विथ VS कोड. हम लोग इसको फाइल को एक्सेस करेंगे. इंडेक्स फाइल इज देयर. अलॉन्ग विद दैट लेट्स सी हम लोग को ये ऐड करना है इसमें. राइट, लाइक हम लोगों ने इसमें ऐड करें, वी वांट टू कंट्रीब्यूट टू एन ओपन सोर्स. राइट, तो हम लोगों ने इसमें कुछ ऐड कर दिया. वी कैन से गेट ऐड चेंजेस are added. Git commit minus. You can say some changes and I can do like git push origin main और मैंने इसको पुश कर दिया. बट व्हाट हैपेंड नाउ, यहाँ पे मेरे को एक्सेस नहीं है इस रिपोजिटरी का. सो हाउ एम आई गोइंग टू कंट्रीब्यूट? अगर मेरे पास एक्सेस ही नहीं है, सो हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू दिस रिपोजिटरी? अगर मुझे ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना है, हैव टू contribute to the repository and I don't have an access. Now the solution to it is a concept called forking. Let's look at this repository. This repository belongs to pages 0 to 1 and I cannot edit this repository, right? So what I can do is I can just create a new fork. Open repo, create the main branch only. Now इससे क्या होगा कि एक fork create हो जाएगा. Now as you can see, open repo, it belongs to pages 0 to 1 and it is forked from pages 0, 1, 2. Now ये repository मेरे पास आ गया. Right? Now I can copy this code. ये code मैंने copy कर लिया. I can just go here. Let's create a new folder. यहाँ पे folder create कर देता हूँ मैं. Let's call it new open source. इसको open कर लिया. Let's have a terminal and git clone link dot. Now ये हम लोग ने जो रिपोजिटरी क्लोन किया है, that is the forked version of this repository. Right, we can just press code dot, which would open this folder inside VS Code. यहाँ पे आप देख सकते हो index.html फाइल है. तो यहाँ पे मैंने चेंजेस मुझे पेस्ट करना है मेरे. I can paste like by this. यहाँ पे चेंजेस मैंने पेस्ट कर दिया. Now I have to do the same thing. I can do git add, git commit, save changes, and I can do git push origin. Now मैं ये push जो कर रहा हूँ वो मेरी रिपोजिटरी में पुश कर रहा हूँ, that is pages 0 to 1. Now since ये रिपोजिटरी मेरे अकाउंट में, I can do it, right, because I have the access to it. अगर आप ये रिपोजिटरी में आ जाओगे, you can refresh it and you can see the branch is one commit ahead. Right? तो यहाँ पे
you can do a pull request. There's a new pull request. यहाँ पे changes आ गए. This is the changes we have done and create a pull request. Now यहाँ पे एक difference आपको notice करने मिलेगा. The pull request of pages 0 to 1 slash open repo is being made to the base repository. ये base repository that is pages 0 to 1 है जो अपना original project है उसको ये pull request create हो रहा है. It is not being created to our own repository. That is the difference. Now, जब यहाँ पे अपन pull request create करेंगे there are no merge conflicts and the pull request is created. यहाँ पे देखो ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो गया है बाय पेजेस 0 to 1. अगर आप अपने ओरिजिनल रिपोजिटरी में जाओगे यू कैन सी अ पुल रिक्वेस्ट क्रिएटेड बाय पेजेस 0 to 1. नाउ दिस इज हाउ यू कंट्रीब्यूट टू एन ओपन सोर्स. हम लोग ये रिपोजिटरी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते. यू हैव टू क्रिएट अ फोर्क एंड आफ्टर क्रिएटिंग अ फोर्क यू हैव टू डू द चेंजेस इन दैट फोर्क एंड देन यू कैन पुश योर पुल रिक्वेस्ट इनटू दिस. Now, as the owner of this repository, I can see this fork. यहाँ पे मैंने देख लिया. I can just compare the changes and everything, and then I can merge this pull request. As you can see, मैंने यहाँ पे confirm कर दिया. And inside this original repository, like the open repo, you can see the changes. This commit you can see it, right? It is done from pages 0 to 1. That is our other account. And inside the contributors, you can see the contributor added. When you do any contribution, like अगर आपने कुछ changes किया and it is added to the repository, only then you can see your name as a contributor. So this is how we created a repository. यहाँ पे हम लोग ने ये repository create किया named open repo in this account. Then we went to another account and we poked the repository. हम लोग ने changes किया, we pushed it and we merged it. So this is basically how you can contribute to an open source software. Now that we have learned how to contribute to an open source project and how to create an open source project, हम लोग यहाँ पे एक example देखेंगे. Like let's go for real life example. Let's search material UI. So material UI का repository कुछ ऐसा है. This is an open source project. As you can see, there is an MIT license which specifies this is an open source project. यहाँ पे एक about section आपको देखने मिलेगा. वहाँ पे link है to the documentation. There are tags added. You can see contributors here. So like ये लोगों ने इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया है. यू कैन सी पूरा कोड आपके लिए अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, ऑन द इंटरनेट अवेलेबल है. एज यू कैन सी उसके नीचे एक रीडमी फाइल भी दिया हुआ है. वेल डिफाइंड वेल फॉर्मेटेड रीडमी फाइल है. सो हम लोग ने जो स्टेप्स फॉलो किए ये लोग ने भी वही फॉलो करके एक पूरा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्रिएट कर. सो लाइक दिस वी हैव एक्चुअली कवर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एज वेल. तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा व्हाट इज एन ओपन सोर्स, हाउ टू क्रिएट एन ओपन सोर्स और हाउ टू कंट्रीब्यूट टू एन ओपन सोर्स. इसके साथ ही हम लोग ने एक रियल लाइफ ओपन सोर्स एग्जांपल भी देखा. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय.